Are you a 9 to 5 person? So there is a kind of, let's say, a huge pressure on the students to, let's say, कि engineer बनना ही पड़ेगा, you know, or else doctor बनना ही पड़ेगा. Let's talk a bit about placement season. है ना? यार believe in yourself, हो जाएगा. I know it's tough, but I think that is important. Because you need to have some merit and you also need to have some luck. Luck क्या होता है? Luck is equals to opportunity plus merit. Correct. Yes. है ना? Yes. तभी होगा. मतलब नहीं ऐसे ही सारे बनते नहीं है ना. Would you prefer money or would you prefer opportunity? But in a Indian population of 1.4 billion plus, ठीक है, वहाँ पे how much is enough? And then I have friends who are earning more than 2 lakhs, ठीक है, but उनकी वही प्रॉब्लम है कि यार पैसे कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता. To not to get bored in what they are doing and to do it continuously for a long time. Yep. कोई अभी भी हमारे कंपनीज में है जो 40-50 years में भी he is really strong. What do you feel about work-life balance? तो संदीप स्वागत है यार. ये मेरा पहला पॉडकास्ट है तो आई थिंक हम कुछ तो अच्छा करने वाले हैं. जो एम रहने वाला है इस पॉडकास्ट का वो रहने वाला है कि यार हम सुनते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें समझते हैं सुनते हैं. हम दोनों जो हैं प्रोफेशनल हैं वर्किंग प्रोफेशनल हैं. वी हैव अ 9 to 5 जॉब. तो बेसिकली हम चाहते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक ये पहुंचाना कि एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी क्या है. मतलब जो बेसिकली आज के टाइम पे लोग जैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में है ना. यू आर डूइंग रियली गुड इन योर लाइफ है ना. तो मैं चाहता हूँ ये देखना कि इवन फाइनेंशियली फैमिली वाइज हो गया या लेट्स से करियर वाइज हो गया. मैं चाहता हूँ कि आप बेसिकली एक्चुअली रियलिटी क्या है जो एक वर्किंग प्रोफेशनल की जो चीज़ें हम ऑनलाइन आजकल समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कुछ बात करेंगे. ठीक है. ये भी चाहता हूँ कि हम बेसिकली लोगों को इस पॉडकास्ट के थ्रू ये भी समझाएं कि हम कैसे जो एक्चुअली में हम ऑनलाइन फाइनेंशियल्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर हम टेक के बारे में बात करेंगे आज उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो ज़रूरी क्या है और क्या व्हाट वर्क्स फॉर यू व्हाट डजंट वर्क फॉर यू है ना. और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आप नहीं कर रहे. ठीक है. तो उसके बारे में भी बात करेंगे ज़रूर है ना. तो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक आप अपने बारे में कुछ बताइए. First of all, thanks for welcoming me to this talk show, Siddharth. So myself Sandeep, मैं actually engineering manager हूँ at PeopleStrong. So I am actually owning 3 teams at PeopleStrong and it's a huge responsibility जो कि एक engineering manager का होता है. That's a really huge responsibility because you are owner for that 3 teams and you need to be responsible for whatever it is, right? So yeah, there are sorry मैं आपको थोड़ा सा काटूंगा संदीप. मैं ये भी चाहता हूँ कि आप हमारी जनता को ये भी बताएं कि आप कहाँ से हो आप अभी कहाँ रह रहे हो. okay. ठीक है. आपने क्या पढ़ाई करी है. ठीक है. ताकि उनको पता चले कि बेसिकली आप यहाँ तक पहुँचने के लिए आप आए कहाँ से हो आपकी रूट्स क्या हैं. समझ गया. So यहाँ पे थोड़ा there is a magic here, let's say. So first of all I am from Andhra Pradesh. ठीक है. So but my native is Maharashtra. So मुझे तेलुगु भी आती है मुझे मराठी भी आती है मुझे हिंदी भी आती है because मराठी is almost near हिंदी, right? So then मुझे इंग्लिश भी आती है. ठीक है. So my first to inter and 11th and 12th grade तक मेरा सारा आंध्रा में ही हो गया था. ठीक है. And for engineering I've been to Jamshedpur and I've studied in NIT Jamshedpur. Post that NIT में क्या किया? Computer science and engineering. Yep. So most of the people from Andhra there is a rat race that's going on in Andhra क्यों है Pradesh. ऐसा?
That's because of every parent there wants to have their become, I mean, for their child to become an engineer or a doctor. So there is वहाँ पर मैंने भी देखा बिजनेसमैन है हमारे काफी ज्यादा जो साउथ से ही आते हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम पे। हमारे पास काफी नोन नेम्स भी हैं जो साउथ से ही आ रहे हैं। तो वो उस रैट रेस का पार्ट क्यों नहीं है और ऐसा क्यों है कि मतलब क्या ये जनरेशन में शिफ्ट हुआ है, क्या आज की जनरेशन का ये इशू है कि ये हमेशा से ही क्या क्या है इसका? नहीं, ये सारा आई थिंक 90s के जो लोग हैं 90s के जो स्टूडेंट्स हैं there it has started when these IITs came in, when these NITs came in, parents have started thinking कि अब मेरा बच्चा जो मैंने नहीं कर पाया, so every parent there talk this way that मैं नहीं इंजीनियर कर पाया तो तुम कर लो, मैं नहीं डॉक्टर कर पाया तुम डॉक्टर बन जाओ. So there is a kind of, let's say, a huge pressure on the students to, let's say, कि इंजीनियर बनना ही पड़ेगा, or else डॉक्टर बनना ही पड़ेगा. Some become, by passion they become a doctor or an engineer. Some follow that rat race and become an engineer or doctor. So yeah, I mean, most of the people, they don't have a clarity what to become and they just follow their parents' words. Maybe I'm one of them too, So yeah. तो आप बनना चाहते थे वैसे इंजीनियर कि आपको पता था क्या करना है? क्योंकि आई थिंक आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बहुत ही कम लोग होंगे जिनको एक्चुअली में पता है कि उनको करना क्या है ना? मेरे पास अब जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मैं जब पहले भी यूट्यूब पे वीडियोस निकाली थी एक दो, मतलब ठीक ठाक रिस्पॉन्स था, बट उसके ही थ्रू जिन्होंने वो वीडियोस देखी उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, ठीक है, बहुत, और इवन जब मैं भी कॉलेज में था, तुम कॉलेज में, हम सब कॉलेज में थे, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा होता था यार कि लोग ना बोलते थे कि हम यहाँ पर आए तो हैं बट हम शायद अपनी मर्जी से नहीं आए, है ना, हमें पता भी नहीं है. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट आई थिंक, क्योंकि आई थिंक हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम जो काम हमारे को जैसे पढ़ाया जा रहा है ना, हमारे को शायद वो पैशन और उन सब चीज़ों के बारे में तो पता ही नहीं होता, है ना. हम आई थिंक बहुत लेट हो जाते हैं. और एक मेंटल प्रेशर होता है, खास करके इंडियन फैमिलीज में ये है, देखा है मैंने भी, है ना. तो मैं ये भी देखना चाहूँगा कि जो आपको, तो वेयर आई एम कमिंग इज कि आपने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन करी तो वॉज इट योर डिसीजन, वॉज इट योर फैमिलीज डिसीजन? Because I have seen engineers doing so well right now. Even there are my friends, and maybe we'll call them in the next podcast too, है ना. They are working in the big companies right now, like Amazon and everything, right? But it was not their choice, right? It was not their choice to become an engineer, obviously, है ना. But they are doing good, and at the same time, there are people जिनकी ये choice नहीं थी, and they're actually not doing good. But they are doing good in something else. They're pursuing something else. They're doing something else. है ना? So मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी जर्नी थी, becoming an engineer, say currently becoming an engineering manager in a product company, है ना? तो वो जर्नी कैसी थी? वो जर्नी का स्टार्ट जब हुआ था, was it easy? Engineering was easy for you? If it was your choice or not? ठीक है, तो वो जर्नी कैसी थी आपके लिए? Okay, so maybe I'll tell you a story. That's a very interesting story actually. So जब मैं 10th में था, let's say, so everybody, teacher was asking कि everybody क्या बनना चाहते हो, let's say, ठीक है. So everybody was saying engineer or doctor, ठीक है. But I want to be, I mean, at that point of time, my inspiration was Ambani, let's say. I want to become an industrialist. I want to have some factories at least, जहाँ पे मैं, I am the boss. Fine. So. But did you knew what a boss means back then? That's what I'm saying. So when I asked my physics teacher, कि मुझे industrialist बनना है, तो he told me that you need to study engineering. So ये उन्होंने बताया, and then I was just blindly, I was just following that कि मुझे engineer बनना है. He didn't say what engineer, he didn't say mechanical, he didn't say computer science, he didn't say anything. He told me to become an engineer. So वो मेरे दिमाग में तब बैठ गया था, ठीक है. So then once so inter and the 11th and 12th grades, which I mean, there's a huge competition. There are colleges like Narayana and Chaitanya which actually
make you study, you know, from 9 to 9, and you know, there are a lot of there is the, you know, a lot of study going on there, you know. No food, you know, you just study, you go on studying. I was a nerd then, you know, until my engineering I was a nerd, you know. So once I completed my 11th and 12th, I've received these marks and IIEEE and IIT and all. So I got some good marks or some good rank in IIEEE. And colleges, I mean, we had to go to counseling, fine. So there was an option to take up CSE or ECE. Okay. So how much did you score in JEE? In IIEEE, it's around 9,000 probably. You know, the rank was 9,000. Okay. I don't remember. It was a lot. Yours was IIEEE? IIEEE, yeah. Okay. Yeah. So right now probably there is no IIEEE or something. There is just JEE mains. JEE mains, correct. So the right then, you know, there was just IIEEE and I've scored around 9K rank and or something. So there were a couple of colleges, both private and government. You know, I was more interested in going to NITs actually, and I wanted to have the best NITs possible, like NIT Calicut, NIT Trichy and all. But probably there was no you know, CSE or ECE, I was, you know, getting there. So then, you know, my father called a lot of folks, you know, if we need to pick CSE or ECE, where jobs are good and all. So that was not my decision what to pick, CSE or ECE or anything, mechanical, civil, anything. So that was, you know, talking to all the people and all. I was sitting in a bus stand, I still remember, I was sitting in a bus stand and, you know, my father was calling all his friends and all who were doing this software engineer job. And he was asking all the people. I was getting all the recommendations to, you know, take CSE or ECE and all. So everybody was saying take CSE. CSE. Yeah. Because there is a boom there. You know, there is a boom. Doesn't matter where you get it. Just take CSE. Just take CSE. So I was probably getting it in. You didn't know what it means. No. You didn't know what did. Okay. Nothing. So yeah, that is what I was saying, right? Nobody knew what CSE is, what you know, what they just knew that if you do CSE, you'll get software, you become a software engineer. If you take ECE, there are two options: either software or hardware. You know, the subject or modules related to ECE, let's say electronics, for example. So yeah, so then it was CSE. I've been to Shastra, you know, there I just, you know, I went to counseling, but then my preference was NIT Jamshedpur. I joined there. Yeah, so there the journey starts, you know. Again, I was a nerd there. I was always studying. I've been into clubs like, you know, dance club and all. But, you know, at the end of engineering, you know, I've realized that, you know, post getting the job, there my freedom started. Until then, you know, I was a nerd. Fine. So, until then I was a nerd, and then my journey started where I was free. So, what challenges did you face mostly in your college as a guy from South coming directly into North, maybe not knowing Hindi as well? So not that much, because I already know Marathi, so it was easy for me. But my fellow, you know, students, fellow friends, it was tough for them. But yeah, I mean, it was a year of time, you know, where they can. But if you want to change something from your college life, right? Anything. So yeah, maybe I at least, you know, spend some more time with my friends. You know, I had a friend, you know, Sampath. You know, I was more with him, and you know, he was also a nerd. He was also studying a lot, and I thought, I mean, what I could change in my colleges, I you know, participate in a lot of things. You know, dance or, you know, anything else other than studying, let's say. So that would be my you know, that is what I would change if I go back. But yeah. So that in my farewell to, that is what I've told, you know, and my farewell to, that first 3 years until I got the job, it was just about, you know, studying and getting good grades. You know, that was a rat race for me too. I mean, till I got a job, it was a rat race every time. Okay, so how did the first job happen?
That was a really, great moment for me. Uh, so first of all, in third year, you get internships and all, right? So internships. So I've tried a lot. I mean, getting into an internship, through the college is a bit tougher because only a few companies come to a college, right? So you have to be best. You have to be the best. Then only you can get an internship into it. But already you are in an IITN, right? NITN. So NITN. So I think you were one of the top already. Yep. Right. So you were one of the best in the country. Yep. Still, they were the best of the best. Those are already trying to get the internship, right? So yeah, I mean, I've got an internship in IIT Kharagpur, in third year. That was through my friend Sampad itself. He gave my name to my professor. He actually nominated my name for creating an Android app for some PhD person there. So it was good. I've done my internship there. It was really good. It was a really nice. So this was the internship job. Yeah, it was a internship job. And now, what about the full time? Yeah. So coming to my full-time job, I've given interviews for Amazon and a few more, couple of interviews to few of the companies. But coming to OYO, so there were few rounds. The first round happened in the night, which is a aptitude round. I've cleared it. That I got to know at 3 a.m. in the morning. I was then I then started preparing. You already know that we start going through all our previous questions of interviews of that company. So I've started going through all the interviews questions of OYO, I didn't eat anything. I just gone to round 2. There were some coding questions there. There were some coding questions on something around stacks. That happened in the morning? That happened in the morning. Okay. Around stacks, around, let's say... So DS Algo. Yeah, DS Algo actually. So, round 1 and round 2. So, after round 2 was done, I went to the HR. I've asked him, am I selected? So, because he was sitting just behind me. So, I went to him, I've asked him, am I selected? He said, yeah, you're done. So I just kept calm. I just went out. I didn't say anything. First of all, there was a lot of crying, inside. I didn't say any of my friends that I was selected. It was like, it was a success, right? Yes, I have done if you have watched a Jersey movie, he goes to the railway station and he just cries a lot, screams a lot. So I was like that. So वो moment में सबसे पहले किसको बताना चाहते थे? Obviously my mom, I've just called my mom, coming out of that computer center, I've called my mom and, I was crying a lot. I've just called my mom and, I've told her, she was also crying there. My father also was crying there, Nice. It was a great achievement, right? That's when my freedom also started, but in any case, so I didn't tell any of my friends. I just went to my hostel, then to temple, and just came back. And then there was a lot of belt beating, after that. The hostel things. Yeah. Okay. So let's say let's talk a bit about placement season. है ना? I know I have been through it. You have been through it. People currently watching us, students, right? College students who are going through it right now. Placement season is currently on, right? And it will be going on every year, right? So tell me about that. So how was your placement season? So like मैं पहले अपना बताता हूँ, right? मेरे लिए placement season was not good. ठीक है, मेरे लिए it was really bad. It was more like companies were coming. I had so because I'm not from a NIT, right? Not an IITN. I am from a local basically college. Touchwood, the college did great at my time. It's actually doing good right now also. It's in Chandigarh. So their companies were coming, but because there were so many people, like मैं अगर अपना बताऊँ तो I think 900, 800, 1000, I don't know. That was the count of people in CSC, computer science. That's a lot. So there was always a cutoff.
even for sitting in a company, Yeah, right? we There was also did always a cutoff. Yeah, that because I did score good in 10th. I did score good in my college. Right, the pointer CGPA was really good, but my 12th standard was not that great. Right. So because of that percentage of 12th standard, I was getting cut off from all the lists majorly. Okay. Right. So getting on a call with my parents every night. Okay. Right, when the placement season was happening, and telling them कि यार आज भी आई थी पर हुआ नहीं, Okay. बिठाया नहीं. Okay. ठीक है. That was, I don't think so that's a pressure that a person just listening to this can understand. I understand. Right, because you have worked 3-4 years for that day, and then that time starts and हो ही नहीं रहा है, बिठा ही नहीं रहे हैं, है ना? So that was like really a mental hurricane, I would say. Right. Yep. So eventually I got placed in a good company, no whatsoever. But I think that the time from I would say where the placement season started, from the time I got placed, there was this uncertainty. There were thoughts in my mind. Right. Everybody has that. Yeah, I think two negative thoughts, nothing positive, I would say, है ना? There was so much pressure कि यार घर पे क्या बताएंगे, not only कि करियर में क्या होगा, मेरे लिए तो ज़्यादा प्रेशर था यार घर पे क्या बोलूँगा. ठीक है, मैंने तो वीडियो कॉल करना ही बंद कर दिया था. ठीक है. Okay. So, but eventually when I got placed, it was similar. Like my mom started crying, my dad started crying, even I cried, right? But then there were people, my friends, who did not got placed in that company, right? They also had their experiences, right? So we have seen that, right? So how was it for you? Why I'm asking this is because I really want to tell the students, the graduates that are actually going through this season of placements, that it's okay. I understand. It's okay, right? If you are in a pressure and you are seeing your friends getting placed and लोग आसपास वाले place हो रहे हैं और तुम नहीं हो पा रहे हो, तो you need to hold on to your thoughts. Correct. Right? Correct. You need to tell yourself कि यार believe in yourself, हो जाएगा. I know it's tough, but I think that is important, right? So how is it for you as an NITN? I just told you as a not NITN or IITN person. So how was it for you? It's the same actually. So I'll just tell my, there is a flashback to my story, So first of all, there is a ex company, which had a data analyst job. That's not a software engineer job actually. It's not developer profile. It was a data analyst job. Okay, it worked. I mean, I would probably work on SQL and R probably. So and it has a good package. I mean, at that time, in 2018, around 2018, it had around 12 to 15 lakhs LPA, of like a CTC. dream company. Yeah, like a dream company for all the students, right? At that point of time. So, so there were only 2 rounds. One aptitude and aptitude round probably, and the other was HR round actually. Fine. So that was also in the night, evening, probably the previous day. I have given that aptitude round, and we got the results in the night at probably 2 or 3 a.m. Okay. Now I've called my father at 3 a.m. Asking कि ये data analyst job है, तो मैं join करूँ कि नहीं? इसका salary तो बहुत अच्छा है, 12 to 15 lakhs है, मैं इसकी join करूँ कि नहीं? And also my seniors, I've called my seniors too, कि ये join करना अच्छा है कि नहीं, My father gave me this confidence because see, everybody was getting. But again, data analyst is not a bad. So that was not a data analyst job. That was some, let's say, support job. Let's say I wouldn't say because R and SQL. Basically, it was a profile which you have not prepared for. Yeah. It was a and profile. I don't want to be. Yeah. So that profile is okay, but you were not targeting that. Exactly. वो तुम्हारा target नहीं था. इस वजह से you were confused. Correct. Okay. मतलब ऐसा है कि वो support का job था kind of. It was not a developer role जहाँ पे मैं I can grow, let's say. So what you were prepared for? Yeah, exactly. My 4 years, I've learned something I had to showcase, which anyways is not of use. So yeah. I've called everybody. I was not sleeping then, and my father just gave me this confidence कि यार कहीं पे तो हो जाएगा. Don't worry. मतलब just be patient.
कि कहीं भी हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, मतलब नहीं भी आएगा तो चलेगा. He gave me this confidence that night, and after that, you know, there was no going back. So you know, just be patient. I mean, it's just about patience, you know, and upskilling yourself, learning DS Algo and coding. You will get into some other company. You just need to have some patience there, and confidence that you'll get into something at least, right? So it is that, you know, I've just left that job. You know, the next day I went to the HR round, and I told them, you know, I'm not that interested in this role, and you know, I'm focusing on that role. So they were okay. And then I got into the best company actually. So yeah, I mean, you need to have the patience, you need to have zeal, you need to learn, you need to get yourself ready for the interviews. So just be patient. ग्रेट यार, ग्रेट. सो अब जम करते हैं तुम्हारे कॉलेज के बाद तुम्हारी फाइनेंशियल करियर पे, तुम्हारे ग्रोथ पे, तुम्हारे जॉब पे, ठीक है. सो आर यू अ 9 to 5 person? It depends. So you're talking about the work-life balance, right? If I'm not wrong. So for me, just to give you a brief, what would this question would lead to, मैं बेसिकली क्यों ये पूछ रहा हूँ. आज के टाइम पे एक बहुत ज़्यादा हवा है, ठीक है, मैं हवा ही बोलूँगा उस चीज़ को, ठीक है, कि यार कब तक 9 to 5 जॉब में फंसोगे, कब तक ये करोगे, है ना, अपना कुछ करो, स्टार्टअप करो, ये है वो है ना. आई डोंट थिंक सो दैट इज करेक्ट फॉर एवरीवन. राइट. आई रियली डोंट थिंक सो. आई रियली फील कि यार इफ समवन इज फीलिंग गुड इन हिज 9 to 5 या वट एवर द टाइम इज, है ना, he or she should stay. Yep. है ना. So क्योंकि if money making is easy, everyone would be doing it. Exactly. Yep. है ना, everyone would have done it. है ना. So if you are not so everyone has that person who can do his own business or something like that. But I think if you are happy with your 9 to 5, you might not need to work for your own, start working for your own business, I would say. Exactly. Right. Yep. So are you a 9 to 5 guy? And what happened when your job started? How was your career? How was your starting of your career? How it eventually grew, right? And at the end, what about the salary in your basically industry, right? So if it's okay if you do not want to tell the exact numbers, but I think to give an idea of estimates, you can tell people what to expect in this industry for at least the next generation to come. So post my college, you know, I told you I've got this freedom, you know. There are a lot of students who actually, you know, once, you know, since their beginning, you know, they have been a nerd, and you know, they just study, they just get good marks, right? And they just focus on studying, right? They are just focused on, they are nerds, and they are just grade conscious, right? They are just CGPA conscious. So I was one of them, and once I got the job, I was free, like you know, एक कुत्ते का जो ये होता है ना, वो खोल दिया है, it's free, भाग रहा है, ठीक है. Starting of my career, it was, so I've joined a company that was a good company, and you know, product based company. Yeah. And there were a lot of friends, you know, in that office, and I was not that focused. I was just getting some work. I was just doing that. Just at the start of my career, there was no focus. There was no you know, goal, let's say, you know, and until the reality stuck. You know, when the performance review started, when everybody was talking about salary hikes, when everybody was talking about performance performance reviews and all, until then it was, I was free, I was doing anything I wanted. I was just taking things for granted, actually. Then reality stuck, you know. So then my manager actually called me into a room. मतलब बहुत rarely one-on-ones होते थे तब, kind of. My manager, no offense to my manager, anyways. So I was bad then, you know. So he called me into a room. He told me that you are a red flag.
you're not you're not focusing, you're not giving me things in deadline, you're not eligible here, let's say. But he didn't fire me or something, he just told me that, he just gave me this feedback. Then reality stuck, and I started taking things seriously. Right. It was very start, like first reviews. Yeah, it was my first review then, actually. Probably the mid-year review that happens in 6 months. So so I started taking things seriously. For the audience, what is the reviews? Okay. That's what your marks are, whatever you have done, that's what your marks are, that's what your grades are, It happens frequently? It happens in 6 months and 1 year. Okay, so 6 महीने और 1 साल में बेसिकली रिव्यू होते हैं जहाँ पर आपको फीडबैक दिया जाता है कि आप कैसा कर रहे हो. करेक्ट. मिड ईयर रिव्यू एंड फुल ईयर रिव्यू एंड सैलरी हाइक्स भी होते हैं. ध्यान रखना सब लोग. अब बेसिकली ये किसी को कोई बताता नहीं है, राइट, कि तुम लोगों का सैलरी रिव्यू होगा और एल्स परफॉर्मेंस रिव्यूज होंगे, और एल्स इट्स नॉट अबाउट परफॉर्मेंस रिव्यू, बट स्टूडेंट्स जो इतना पढ़ के इतना 25 years दे स्पेंड देयर लाइफ स्टडीइंग, एंड जो बाहर आते हैं दे आर फ्री नाउ. कोई भी बताता नहीं है कि यू स्टिल नीड टू बी फोकस्ड, अभी पर ये तो ऑब्वियस है ना, मैं समझा नहीं. समथिंग लाइक जस्ट गिव एन एग्जांपल. मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है. मुझे एक टास्क दिया गया है, ठीक है. मुझे कुछ डेडलाइन नहीं दिया गया है. पर डेडलाइन तो होता है हमारी इंडस्ट्री होता है, बट जस्ट इन केस देयर इज गुड अमाउंट ऑफ डेडलाइन हमें दिया गया है, फिर भी हम लोग उसको रीच नहीं कर पा रहे, जस्ट इन केस, फाइन. एंड उसको और भी डिले करके डबल द एफर्ट लगा के, मतलब डबल द टाइम लेके, लेट्स से हम सॉल्विंग इट, लेट्स से. सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कोई बताता नहीं है कि डेडलाइंस पे काम खत्म करना होता है, ये कोई बताया नहीं था, ठीक है. एंड टाइम आने पे बोलेंगे कि हुआ नहीं. हाँ. और रेगुलरली डेली स्टैंड अप्स होते हैं, बट they just asked me, they were not, let's say, not focused on that task that I'm doing, let's say. So basically it might be something ke you were not involved in that much critical task. Correct. And exactly. That's why it was a bit of let go. कि हाँ चलो ये तो करता रहेगा, हाँ, तो चलेगा. हाँ तो चलेगा. पर जो मेन काम है वो, क्योंकि you were a fresher, तुमने थे तो तुम्हारे को नहीं दिया हुआ था, तो जो मेन काम था वो शायद किसी और के पास था, तो you were like a fresher who were not in that limelight. तो तुम्हारे पास वो लाइमलाइट नहीं है, तो तुम्हारे पास जो टास्क है उसका शायद उतना फोकस नहीं है मैनेजर के पास, जो कि होता है यूजुअली, बट देयर आर स्टिल बिकॉज सीख रहे हो, और वो वाली like exceptional cases, कि हाँ ठीक है चलेगा, करने दो ना उसको, ठीक है, सीख लेगा, that was attitude that they had, let's say. फिर रिव्यूज के बाद फिर काम डेडलाइन पे हो जा रहा था, एंड अपस्किलिंग भी हो रहा था, जावा भी सब आ गया, स्प्रिंग बूट भी सब आ गया. तो उसके बाद माई I'm by luck, I've got the opportunity to go to Germany. So I was really happy then, I was also sad because I've got a lot of good friends in that company. I that's a phase, college भी एक phase है जहाँ पे Germany for working. Yeah, for working. So they have, the company itself has sent us to Germany on contract basis first of all, but they have made permanent there then. So it was a great transition, that's when I've met my manager, let's say. That's where I've changed, that's where I have grew to a better man, to a better developer actually. So challenges क्या थे, मतलब going to Germany और नहीं, तो जब आप बोल रहे हो कि आप बेटर पर्सन बन गए, आप अब EM बन गए, आप इंजीनियरिंग मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच गए, सो इट टुक यू गुड 5 years, राइट, 5 years 6 years इट टुक यू, व्हिच इज फॉर योर एज इज अ वेरी लाइक बहुत जल्दी है ना, सो व्हिच इज ग्रेट. इट मींस इट चेंज, समथिंग शिफ्टेड इन यू, राइट. सो क्योंकि इंजीनियरिंग मैनेजर्स यूजुअली कंपनियों में कईयों में नॉर्म्स होते हैं कि यार बेयर मिनिमम 7-8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तब होगा, है ना. बट आप बहुत जल्दी बने, you became an engineering manager very soon in your life, है ना. So you might have done something right, correct, है ना. So first of all I would say कि क्या क्या मेन challenges थे, ठीक है, उस जगह तक पहुंचने के लिए, ठीक है, और क्या तुम खुश हो जहाँ तुम हो? Are you happy as an engineering manager? So first thing, I'm really happy. जो मैं, so
everybody doesn't get this opportunity. First thing, everybody doesn't get this opportunity कि वो engineering manager बन गया 5 to 6 years के बीच में experience है वो engineering manager बन गया, ये नहीं होता actually. So I'm really lucky that I've got this opportunity. would you say कि ये opportunity है, would you say ये merit है? Both actually, because you need to have some merit and you also need to have some luck, you know, because सब लोगों को because this is a triangle, you know, 10 डेवलपर्स होंगे, उसमें कोई 5 ऊपर जाएंगे, फिर कोई 2 ऊपर जाएंगे, फिर कोई एक CTO बनेगा, राइट? एक सारी कंपनीज में 2-3 CTO तो होते नहीं है. So that is how the hierarchy works, right? So you need to have some luck too, you need to have some merit too, both. So my manager has taught me a lot of things. Then when I started my work in Germany, my manager has taught a lot of work there. You know, he actually taught me कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ते हैं, चीज़ों का ownership कैसे लिया जाता है, how are you responsible for whatever you are doing, right? So you mean ownership is important? Really important, really important. तभी you'll also grow, right? So first of all, first promotion would be to an SD2. Then you know, you see how you are working there. So you need to have the ownership of whatever modules you are having, you know, with you, whatever services you are owning, right? So so tabhi there is an opportunity. You are a lead you are also mentoring people. You are also taking care of modules. You are responsible there. You are having that ownership. You need to gain a lot of technical skills actually. So that is your opportunity. And मेरे को लगता है ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे हम प्रमोट हो सकते हैं इस करियर के अंदर, तो आई थिंक ये एक अलग पॉडकास्ट के लिए है एक्चुअली. हाँ. So I will just give you a crisp of, you know, how it happened. So I was taking care of that, you know, that pod, let's say, जहाँ पे मैं SD2 था. I was taking care. My manager supported me a lot, right? And then there was an opportunity when he left, you know, कि ये अब कौन lead करेगा, and he actually suggested my name there, right? So so my manager left, and there was an opportunity for somebody to take up that role. So he has suggested my name, and that's where my luck was, you know. But there was a merit. There was a merit. There was a merit. That is why my manager actually took my name. So I have heard this somewhere कि luck क्या होता है? Luck is equals to opportunity plus merit. Correct. Yes. है ना? Yes. तभी होगा. मतलब नहीं ऐसे ही सारे बनते नहीं है ना. तो so तब he has suggested my name, and you know, I've took that opportunity. That was a huge responsibility, you know. At that age, you know, taking up that responsibility was a lot, at least. You know, because एक IC just code करता है, उसको फ़र्क पड़ेगा, उसका काम और उसका जो लेट्स से मेंटरिंग जिसको भी कर रहा है उससे ही फ़र्क पड़ता है. उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि जो कंपनी का विजन है उसको अचीव करना है, प्रोजेक्ट सही टाइम पे ख़त्म हो रहा है कि नहीं, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, ये सब फ़र्क नहीं पड़ेगा. I'm just you know taking care of my modules and my work, let's say. अब यहाँ पे आता है सब लोगों का, like you know, I'll talk about this challenges, you know, in the meanwhile, but that's where IC क्या है? IC is individual contributor, you know. Not a management field. Not a management field, yeah. That's SD1, SD2, SD3. These are IC roles actually, where you know you are responsible whatever you're doing actually. So so yeah, I've took up that responsibility, and that is where my engineering manager role started. And it is going on. It is going on, you know, till now. मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है. You know, सब कुछ बताता हूँ अब. Like for example, you deal with a lot of stakeholders, right? हम लोग बहुत stakeholders का deal करते हैं. हम लोग जिसके साथ काम करते हैं, there are a lot of different mindset of people, you know, जिनको handle करना पड़ता है, right? That's a very challenging task, you know. And projects deadline पे complete हो रहे कि नहीं, making sure that company's vision and हमारा जो काम है दोनों aligned है कि नहीं, and prioritization, project management and people management, product management. हाँ, so basically इसमें जब IC से manager ऐसे convert होते हैं ना, तो you are clueless.
मतलब एक डेवलपर अपना हिसाब से काम करता है, एंड मैनेजर हो गए तो तुम्हें पता भी नहीं होता है कि क्या करना है, राइट? यू डोंट नो, यू जस्ट हैव सम, यू हैव जस्ट 2-3 लोग होंगे या 5 लोग होंगे जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अब तुम्हें क्या करना है वहाँ पे कुछ आइडिया नहीं रहेगा. सो इट्स योर मेंटर्स दैट गाइड यू. अगर you know, not only for managers but for also for ICs, you should have right managers, right mentors. अगर है तो stay with them, you know, gain the, you know, knowledge that you need to grow, and then, you know, you can shift. But first of all, gain the knowledge. अगर तुम्हारे mentors और managers अच्छे हैं, I would suggest to stay and पहले grow कर लो, पहले सीख लो सब कुछ, फिर, you know, you can move forward. So एक लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले जो मैं पूछना चाहूँगा, जो मेरे को लगता है कि क्योंकि एज अ मैनेजमेंट में मैं खुद हूँ, राइट? तो मैं भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फेस करता हूँ जब देयर आर वन-ऑन-वन्स विद माय कलीग्स एंड एवरीवन, राइट? व्हाट शुड यू प्रेफर? वुड यू प्रेफर मनी और वुड यू प्रेफर अपॉर्चुनिटी? सो क्वेश्चन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि देयर आर पीपल जो आज के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा एक माहौल है जहाँ पर नॉट ओनली इन टेक के लोग ना बहुत जल्दी कंपनी बदलना चाहते हैं क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि यार उसके इतने पैसे मिल गए, उसको वहाँ पर ही इज़ गेटिंग सच अ गुड सैलरी, ही इज़ और दैट गर्ल इज़ और दैट गाय इज़ गेटिंग सच अ ग्रेट सैलरी इन दैट कंपनी, है ना? बट माइट बी दैट वो भी वहाँ पर SD1 है, बट दैट कंपनी इज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इट इज़ बेस्ड इन, वहाँ पर सैलरी डिफरेंस होगा, राइट? अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल्स ऑफ दैट कंपनी वहाँ पर सैलरी डिफरेंस होगा, राइट? सो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा बहुत बार होता है जहाँ पर हमारे को लोग पूछते हैं कि यार मैं शिफ्ट करूँ ना करूँ, मेरे को यहाँ पर मज़ा आ रहा है, यहाँ पर काम अच्छा है, बट यार वहाँ पर इतने ज़्यादा XYZ पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है? सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? मे बी तुम ये बोल सकते हो पहले 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस में, क्योंकि अभी हम खुद 10 साल एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? तो व्हाट हैज़ वर्क फॉर यू? सो फर्स्ट 2 to 3 years मैं एक स्टार्टअप में था, ठीक है? सो startups are places where, you know, there is a rapid growth and development, right? हर दिन ही मतलब you know may create some service, you know, that's how startups work. कुछ नया ही कर रहे होंगे, कुछ नया टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे होंगे. Startups are, you know, you have that opportunity कि तुम सब कुछ सीख लोगे, right? From scratch. So my manager once told me कि जो तुम बना रहे हो, right? उसको पहले देखो वो कैसे स्केल अप कर रहा है, राइट? तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन के जाने के बाद वो स्केल अप कैसे कर रहा है, वहाँ पे कैसे वो बिहेव कर रहा है, एंड देन यू नो यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय देन. बिकॉज तुम लोग कुछ बना दोगे, हम मतलब एज अ डेवलपर वी क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वी डोंट नो हाउ इट स्केल्स अप, राइट? वी एक्चुअली गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज वंस इट इज लाइव, वंस इट इज स्केलेबल, वंस पीपल स्टार्ट यूजिंग इट, राइट? तो प्रेफर क्या हुआ इसमें, मनी वर्सेस अपॉर्चुनिटी? So that is what I'm saying. If you are getting this opportunity to build something that you will be able to see that is actually scalable, that people are actually using for your growth. I mean, this is for your growth. You will learn a lot of things from there. So I would suggest first 5 years mein, if there is an opportunity for you to grow and learn, take up that opportunity. Don't run behind money. राइट? बिकॉज मनी तो यार ये सब सीखने के बाद तो आ ही जाएगा एनीवेज. नेक्स्ट 10 years तो मनी के पीछे भाग ही रहे होगे. तो फर्स्ट 5 years 5 to 7 years इज फॉर यू टू लर्न. तुम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना ही पड़ेगा बिकॉज उसके बाद तो एनीवेज तुम. बट आई थिंक लर्निंग डजंट स्टॉप, बट यू देन गेट यूज्ड टू इट, है ना? बट क्योंकि अभी तुम इतने नए हो इंडस्ट्री में, you have not created your name in that industry, है ना? तो क्योंकि तुम्हारा भी नाम नहीं है, तुम्हें कोई जानता नहीं है ना? तो आई थिंक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम प्रूव कर पाओ कि तुम कुछ कर सकते हो, एक लेवल पे पहुंच पाओ जहाँ तुम नेगोशिएट कर पाओ, राइट? तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यस. सो बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे मतलब कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी में आ गया जॉब, दे डोंट गो फॉर इट एक्चुअली, राइट? आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन करो. आई मीन यू नो यू लर्न थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सैलरी कितना भी हो पहले सीखना है. सीखोगे तभी आगे जाओगे, तभी मतलब इफ देयर इज सम कंपनी वो कुछ सीख ही नहीं रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज यू नो जहाँ पे तुम लोग ज़्यादा सीखते नहीं हो या फिर बेंच में होते हो एंड यू नो यू डोंट लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, फिर ग्रो नहीं कर रहे हो, राइट? सो
even though you're getting a good salary there, you are not growing or you're not learning. So I would suggest first 5 to 7 years you should learn. उसके बाद भी सीखोगे, but पैसा भी तब मिल जाएगा in any case. Yeah. Great. So पैसे पे आते हैं. Okay. ठीक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है. ठीक है. मैं संदीप आपसे ये जानना चाहता हूँ, what do you feel about money? So why I am asking this is, and where I am taking this is, पैसा अभी आप अपनी लाइफ में उस जगह पे हो जहाँ आपकी एक डिसेंट सैलरी होगी. ठीक है, यू आर लाइक आई थिंक 6-7 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर इन अ गुड फर्म, राइट, इन अ गुड प्रोडक्ट कंपनी. तो आई थिंक यू आर गेटिंग गुड सैलरी. ठीक है, आई वोंट आस्क यू हाउ मच. ठीक है, बट आई थिंक यू आर गेटिंग अ गुड सैलरी. सो पहले तो गुड सैलरी क्या होती है? ठीक है, इंडिया में अगर आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है, जैसे आई थिंक फॉर यू आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली राइट नाउ, यू एंड योर वाइफ, राइट. सो एक गुड सैलरी क्या है? ठीक है, एंड फाइनेंशियली व्हेन वुड यू कंसिडर योर सेल्फ कि हाँ यार मैं कुछ सिक्योर्ड हूँ? हैव यू थिंक, क्या तुम सोचते हो इस बारे में? जस्ट लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन. है ना, दो पार्ट्स हैं इसके. ठीक है, एक तो क्या तुम सोचते हो इसके बारे में कि फाइनेंशियली मैं सिक्योर हूँ कि नहीं हूँ? क्योंकि एक चीज़ तो है, देखो, सैलरी या पैसा कभी इनफ तो नहीं होगा. ठीक है, मेरा क्वेश्चन उस ऑडियंस के लिए यहाँ पे टारगेटेड है जहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार आपके पास अगर एक एक्स अमाउंट आता है हर बार बैंक में वर्सेस अ बिजनेस पर्सन, क्योंकि देखो स्टार्टअप का ऐसा कुछ है कि 90% स्टार्टअप्स फेल, है ना. तो आप अपना वो 9 to 5 छोड़ोगे, वहाँ पर जाओगे. ठीक है, एंड यू माइट नॉट गेट अ गुड स्टार्टअप. और स्टार्टअप में भी ऐसा है, जहाँ तक मेरे को पता है कि पहले 3-4 साल तो शायद स्टार्टअप फाउंडर पैसे ही नहीं कमाते. ठीक है, उसके बाद कुछ स्टार्टअप चल पड़ते हैं, जो बूम करते हैं वो बहुत अच्छा बूम करते हैं, नो डाउट. ठीक है, बट इन इंडियन पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन प्लस, ठीक है, वहाँ पे हाउ मच इज़ इनफ कि जब आप बोलो कि आप एक अच्छे शहर Tier 1 Tier 2 सिटी में, एक अच्छी सिटी में एक अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओ, उसके लिए कितना इनफ है? ठीक है, एज अ सिंगल, एज डबल उसमें. एंड व्हाट डू यू फील अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट्स? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे आई हैव ज़ीरो नॉलेज, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है एनीवेज. तो बिफोर 2020 एक फेज़ है, आफ्टर 2020 एक फेज़ है, मतलब बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड. सो बिफोर कोविड बहुत कम लोगों को ही ये फाइनेंशियल नॉलेज था, राइट. एंड in between that COVID, right, everybody has got this financial knowledge, everybody was investing in stocks. That's where Bitcoin boom also came in, that's where everybody started investing into things, right. तब मैंने कुछ नहीं सीखा, because that is my mistake, right. But yeah, I mean जो that I get from my parents, that's to invest in FD, that's to invest in PPF, that's to invest in some postal NPS or something. So ATC, basically ATC. So that is where I used to invest, right. So recently I've started investing into this mutual funds, and stocks and all, fine. So coming to that enough, how much salary is enough part, कितना भी सैलरी इनफ नहीं होता है. that's what so if you talk to your friends too, वो बताएंगे कि यार मतलब काफ़ी ही नहीं यार, सैलरी आता है उड़ जाता है, kind of, right. So for me, if 50% of your salary, if you are spending 50% of your salary, and if you are able to invest a good amount of 30% of your salary into some investments and 20% into some PPFs or FDs, that is fine. I mean, if you are able to live with that 50, 30 and 20 rule, so maybe it's somebody has some other perspective too, but yeah, that is how I do it. I don't invest that 30-20 yet, but you are aiming. Yeah, I'm aiming to, but I spend 50. But अगर हम numbers में बात करें तो enough तो नहीं होता है salary, है ना. But अगर हम numbers में बात करें तो what do you feel कि कितना per month is still okay कि हाँ यार you can live with it, maybe not hand to mouth, you can invest something also, but you can live with it. How much is enough? For me, it should be around 1 lakh or so, 1 to 1. Starting. Basically, if you are 3 years, 4 years experience, so that is something that you should expect. That is enough. Yes, that is fine. You can live with that.
and it should be enough. Even in a city like Gurgaon, that should be enough. Yep. But to that note, है ना, I have seen people earning 50, 60, 70,000 in Gurgaon and even saving. Yep. है ना, मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, गुड़गांव में रहते हैं, 60-70 हज़ार महीने का आ रहा है, उसमें से भी बचा ले रहे हैं, ठीक है. एंड देन आई हैव फ्रेंड्स हु आर अर्निंग मोर देन 2 lakhs, ठीक है, बट उनकी वही प्रॉब्लम है कि यार पैसे कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, ठीक है. तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? So I was like this. I was like this, कि मेरा पैसा आते थे, मैं उड़ा देता था. इतना ज़्यादा भी नहीं कि कि कम्प्लीटली खाली ही हो जाए, बट जो पैसा आते थे वो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ जाते थे, काइंड ऑफ, राइट. We need to have a track, we need to have that financial knowledge, we need to have that maintain that financial tracker somehow. वो चाहिए है जो. So there is a compromise. There is somebody who is earning, let's say 50-60,000. There is somebody who is earning 2 lakhs, right? 2 lakhs वाला बंदा एक जगह रह रहा है, and 60,000 या 50,000 बंदा एक जगह रह रहा है. He is compromising on something, right? He is not compromising on something. He is living his life, and वो कहीं invest नहीं कर रहा है, let's say, तब उड़ ही जाएंगे obviously. And वो अगर maintain ही नहीं कर रहा है अपना financials तो उड़ ही जाएंगे. So financial tracker जो है ना, that is really important. That is really important, which I'm also not maintaining right now. And ये सबके लिए ही है कि ये maintain करना चाहिए. But you are aiming to. I'm aiming to, yes. And yes. so अब जो तुम्हें पता है ना, after so many years of working, earning a decent amount, if Sandeep Chavan was back in 2017, 2018, ठीक है, starting his job, earning a good lump sum amount every month, ठीक है, a decent lump sum amount every month, what advice, ऐसी क्या एडवाइस है जो ये वाला संदीप चवन उस संदीप चवन को देना चाहेगा अबाउट मनी? इन्वेस्ट करो भाई. मतलब ऐसे मत इन्वेस्ट करना कि यू आर ब्लाइंड एंड यू आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक्स एंड दैट्स रॉन्ग. यू नीड टू फर्स्ट स्टडी इट. देयर आर अ लॉट ऑफ theories, and there are a lot of study material on YouTube, on blogs, on Google, on ChatGPT, let's say. There are a lot of study material. सीखो, पहले नॉलेज गेन करो एंड देन ओनली इन्वेस्ट. बट आई वुड सजेस्ट टू इन्वेस्ट नॉट ऑन FDs एंड BPF. रखो बट कीप इट टू अ वेरी मिनिमल अमाउंट एंड इन्वेस्ट करो जहाँ पे कि वहाँ पे you have knowledge of, that it is safe, and that or find a good financial advisor. Yeah, or find a good financial advisor. Makes sense. Yes. Yeah. Great. So आगे बढ़ते हैं. अगला जो पार्ट है वो थोड़ा सा हम अगेन यंग प्रोफेशनल्स की तरफ फोकस लेके जाना चाहेंगे, ठीक है. एक बहुत ज़्यादा डायलेमा है, या मैं इसको ऐसे बोलूँगा, एक बहुत ज़्यादा वेरी मच आस्क्ड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी इज़ कि यार हाउ डू वी डू दिस फॉर द नेक्स्ट 10, 20, 30 years, ठीक है. हम अपनी लाइफ में ये अगले 20-30 साल कैसे करें जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो हर 2 साल में बोर हो जाते हैं, चाहे हम कंपनी से बोर हो जाएं, चाहे हम काम से बोर हो जाएं, चाहे हम किसी भी मतलब जो हम कर रहे हैं उससे हम बोर हो जाएंगे, ठीक है. तो हम कैसे ये जो चीज़ कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में नेक्स्ट काफ़ी पॉडकास्ट में अलग अलग लोगों का ओपिनियन लेना चाहूँगा, है ना. हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो हम करते रहें, हम बोर ना हो, है ना. सो इस बारे में क्या टेक है? तो जैसे फॉर मी व्हाट आई एम डूइंग, आई लव इट, है ना. मेरा केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था ये जर्नी, तो मैंने एज अ IT प्रोफेशनल, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन दैट सॉफ्टवेयर लाइन, एंड मैं 11-12 स्टैंडर्ड से थोड़ा सा उस बारे में इंक्लाइंड था, पढ़ रहा था, ठीक है. तो आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज समवॉट वेयर आई वांटेड टू बी, है ना. नाउ आई हैव सम मोर गोल्स, that's why I'm starting this podcast, है ना. आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी जिसने मुझे इतना दिया, है ना. तो अब मैं उस कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, एक लोगों में वो चीज़ लेके आना चाहता हूँ कि यार यू शुड नो दीज थिंग्स. ये सब जो हम बात करें कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाएगा, राइट. ये सारी बातें कोई नहीं बताएगा.
तो आई थिंक अब ये मेरा एम है कि इस कम्युनिटी को नॉट ओनली टेक बट इन जनरल इस प्रोफेशनल कम्युनिटी को कुछ वापस देना, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस बिकॉज़ आई लव इट, है ना। सो व्हाट इज योर टेक ऑन व्हेन पीपल से कि यार टू नॉट टू गेट बोर्ड इन व्हाट दे आर डूइंग एंड टू डू इट कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम? So this is the same question I've asked my manager actually कि just few days back कि यार ये ये 30 years down the line भी हम लोग कैसे कर सकते हैं let's say, but there are different type of people, मतलब कोई अभी भी हमारे companies में है जो 40-50 years में भी he is really strong, he मतलब कभी भी कॉल करो वो एक्चुअली अवेलेबल है एंड ही इज रियली स्ट्रांग, ही इज वर्किंग एक्चुअली करेंटली टू, ही इज 50 years एंड ही इज स्टिल वर्किंग, राइट। कोई है जो 30 years या 35 में ही रिटायरमेंट ले लिया, अपना कुछ कर लिया है एंड ऑल, राइट। सो इट डिपेंड्स कि तुम पैशनेट हो, तुम जो कर रहे हो तुम पैशनेट हो, यू लव योर जॉब एंड you know nothing else, you know this and you want to you want to retire doing this itself, right? So there are people doing this 50 years bhi. What is your take? For me, I'm going in the flow currently, anyway. And that's fine. Yeah, that's fine. I think it's really important to have good habits, correct, है ना, to wake up, to have that discipline. Yes, yeah. To have that discipline, correct, है ना, rather than to have that wavering mind, है ना. I think do whatever you want to do. Correct. Maybe have a separate side hustle, है ना, तो चेक कि आपको पैशन, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो मैं भी वही सोचता हूँ, ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ थिंग इन माय माइंड कि कुछ नया करना है, कुछ इन्वेंट कर, मतलब कुछ ऐप बनाना है लेट्स से, राइट, कुछ स्टार्टअप करना है। सबके दिमाग में होता है। जो भी मैं मेरे कजिन से भी जब बात करता हूँ, दे आल्सो टेल मी कि हाँ एक स्टार्टअप बना देते हैं, कुछ वीगन स्टार्टअप लेट्स से, दे टेल मी कि वीगन स्टार्टअप बना देते हैं, वीगन का प्रोडक्ट्स बेच देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज दैट there are a lot of ideas that people have, but उसको implementation में लाना, there is a lot of work in it. So सारे ideas दिमाग में ही रह जाते हैं, and there is a lot of thing that needs to be done before we start anything, right? So I'm just going with the flow, and I think about that, and and there is nothing I do about that. So anyways, I mean maybe 10 years down the line I do something on my own, but currently I'm just going with the flow currently. And you like what you do? Yeah, I like a lot what I do. Yeah, I think that is important. That is important because आप रोज सुबह उठ के अगर किसी चीज को करने जा रहे हो और उसको दिन में, जो मैं यूजुअली अपने ऑफिस में भी अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को और सब पीयर्स को भी यही सेम लाइन बोलता हूँ कि अगर इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर एटलीस्ट 8 hours 10 hours एवरी डे, है ना, then you need to be good at it. Exactly. Yeah. You or cannot, else you need to enjoy it. You cannot do it then. If you don't love it, you cannot do it. You'll not be best at it, right? So yeah, makes sense. Yeah. तो यह जो अगला सेक्शन है वो ना बहुत हॉट टॉपिक है जो आजकल प्रोफेशनल फील्ड में पूछा जा रहा है, वो है व्हाट डू यू फील अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, मेरे को एवरी सेकेंड थर्ड डे कोई ना कोई एक जना ऐसा मिल रहा है जो बोल रहा है कि यार तुम्हारी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। हु पीपल आर नॉट, आई वुड से पीपल आर नॉट हैप्पी वेयर दे आर गेटिंग गुड सैलरीज नाउ, है ना, दे नीड वर्क लाइफ बैलेंस। एंड आई हैव सीन कंपनीज जहाँ पे सैलरीज कम है बट देर आर पीपल वर्किंग फॉर 10, 12, 15 years बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सॉर्टेड है ना। So maybe this question will have your insights, right? Okay, what do you see? What do you feel about work-life balance? What is your take? So मैं work-life balance, मेरा work-life balance बहुत ख़राब था. I would say मेरा work-life balance बहुत ख़राब था. Starting में when there were a lot, it was a startup, right? So there were a lot of issues coming in, and we had to set रात तक जागना पड़ता था, 2 o'clock 3 o'clock तक जागना पड़ता था to close those issues, and we had to make something live, right? So work life balance होता है, सारे कंपनीज में ही होता है. It just depends on the time. हम let's say critical project में काम कर रहे हैं, and there is a deadline that we need to deliver some product, and
देन हम लोगों को फिर करना ही पड़ेगा, यू नो, इफ इट टेक्स, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस खराब भी हो, इफ इट टेक्स दैट टू, वी नीड टू डू इट, राइट. सो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस अभी कैसे ठीक हुआ, आई कैन सजेस्ट दैट. मेरा बहुत ख़राब था, फाइन. सो बेसिकली मेरा डिसिप्लिन ख़राब था, राइट. आई डिडंट हैड एनी, यू नो, डिसिप्लिन. आई हैड टू डू दिस थिंग. सो आई डिडंट हैड दैट चंक्स, राइट. सो मैंने डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन किया कि आई नाउ प्लान थिंग्स इन एडवांस. So every day at night I sit for 1 hour, I plan things for the next day, right. This is how my day starts too. I mean my night ends, let's say, or else my day starts कि मैं पहले plan कर लूँगा कि मुझे 9 to 6 everything should be sorted, कि ये meetings ख़त्म हो जाना चाहिए. मेरा जो एक्चुअल काम है, you know, वो सारा मैं ख़त्म कर लूँगा. मेरा मीटिंग्स, स्टेक होल्डर मीटिंग्स, मेरा प्रोजेक्ट क्लोजर्स मीटिंग्स एंड यू नो वॉट एवर, यू नो, मेंटर के साथ मीटिंग्स, यू नो, मैनेजर्स के साथ मीटिंग्स, सीनियर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स. आई ट्राई टू क्लोज एंड one-on-ones too. So I try to put that in that 9 to 6 schedule, and I close all my things in that 9 to 6 schedule. For that I need some planning. So that is what I've started. इसके पहले planning नहीं था, you know, कभी भी कुछ भी आ जाता था, and you know I used to work there, and you know मेरा जो actual काम है, I used to work after 9 to 6, coming home and working on that. So we need to have a discipline, right? Developers भी मेरे पास आके पूछते हैं, right? So कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ad hoc आ जा रहा है, मैं ad hoc पे ही मेरे पास एक issue आ गया, मैं ad hoc पे लग गया, तो मेरा 2-3 घंटे हो गए, तो मेरा project डिले हो रहा है. So my suggestion would be to have a noise cancellation period for 3 or 4 hours, कि तुम्हारा काम है, मतलब तुम्हारा काम इस टाइम में हो जाना चाहिए, and whatever ad hoc or whatever that is, it should be out of that period. So define your timings, have that discipline कि तुम्हारा काम के लिए इतना टाइम है, ad hoc के लिए इतना टाइम है, then only, you know, you would have that work life balance too. So that is what I've started recently, and you know, that's working for me. So I plan things in advance, and you know, then only we can have this work life balance. There would be times जब you know सेव zeros आते हैं, severity issues आते हैं, रात भर जागना पड़ता है. But yeah, normal days में, you know, you can only maintain this work life balance through maintaining discipline actually. Yeah. Great. So work life balance is a habit. Yeah. It's a discipline, it's a habit. Correct. Some companies, yes, they might put a lot of work on you, but I think in general for everyone work life balance is not achieved by your managers, by your company. It is mostly a habit. Yes, it's a habit, and it depends on you. So कि काम भी हो जाए और किसी को तंग भी ना होना पड़े. Correct. और basically it's a discipline. Correct. I think I agree. Because there are, मतलब I've seen developers जो because ऑफिस में आएंगे तो obviously थोड़ा, you know, chill करते हैं ऑफिस में भी, you know, and then they, you know, जागते हैं till night, you know. So that's a bad habit. So basically I think whatever works for you. Yeah, maybe, yeah. Because I think people sometimes enjoy doing things their own way. Alone, in lonely. But I think health is very concerning when it comes to work life. Correct. Because when you are young, you are taking a night, like जाग के रातें बिता रहे हो, और दिन में काम हो नहीं रहा है, रात भर काम कर रहे हो, फिर सो नहीं रहे हो. तो आई थिंक टिल द एज ऑफ 25 इट वर्क्स, बट आफ्टर 25 यू विल फील कि अच्छा मैं अमर नहीं हूँ, मेरे दुखती हैं चीज़ें, कभी पीठ दुख रही है, कभी सिर दुख रहा है, कभी कुछ हो रहा है. तो आई थिंक ये डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, आई थिंक आई एग्री. सब लोगों को, मतलब recently, you know, everybody started keeping these pads behind their backs, and you know, that laptop stand so that they can have that, you know, visibility. So this is not normal for 25 age people, right? So that's a normal now, you know. Just because they are waking up late, staying late and working on those things, and you know, working on the beds, let's say. So this is a greater issue to, you know, focus on. So अगर आप इंजीनियरिंग मैनेजर नहीं होते और अगर आप टेक फील्ड में नहीं होते तो आप क्या होते संदीप? Way back in 10th, अगर, you know, if I had to take a call, then probably डॉक्टर होता. अब थोड़ा आगे आके इंजीनियर खत्म होने के बाद अगर आप पूछोगे तो प्रोडक्ट मैनेजर बनता. अब 2 साल आगे आके आप फिर से पूछते हो तो प्रोडक्ट मैनेजर बनता. तो सॉरी, हाँ, प्रोडक्ट SD3 बनता. माय बैड. सो स्टेजेस ऑफ लाइफ,
But right now, you know, पर अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, अगर आप इस इंडस्ट्री में ही ना होते तो फिर आप क्या होते? पापा बोलते थे ठेला लगा दूंगा वहाँ तक। मतलब अपना कुछ नहीं है। नहीं, so yeah, I mean, yeah, I mean that's what, you know, phases of life है। 10th में there were 2 journeys, either engineer or doctor। फिर आता है you know, developer और product manager, because after engineering, you know, you have that option to do MBA, right? इंजीनियरिंग करते हो बट उसके बाद सब लोग MBA कर रहे, ठीक है, वहाँ पे you know, just go with the flow and this one or that one। So but whatever I'm doing right now, I'm really happy about that। This is a good opportunity for me too, and I'm doing good here। Yeah, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म है। great। थैंक यू सो मच इस चीज़ का पार्ट बनने के लिए, एंड आई रियली होप कि ये पॉडकास्ट उन लोगों तक पहुँचे जिसको इसकी एक्चुअली में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को पता चलना चाहिए कि कई चीज़ें जो हमारे को नहीं सिखाई जा रही हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर होने के लिए, और उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं होती है यूजुअली। सो व्हाट इज़ नॉर्मल, है ना? पीपल शुड फील के यार दे आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड वी आर देयर टू हेल्प। Yep. है ना? जो भी हमने अभी बात किया है, lot of people, you know, students हो, developers हो, they actually face it। Probably this would be really helpful, you know, and thanks for welcoming me in this podcast। Did you like it? It was good, it was really good। These questions are you know, really good and probably will be helpful for the students and developers too। Yeah, ठीक है, थैंक यू संदीप Thank for you। coming, and hope to see you soon in another podcast with some other questions। sure, Yeah. always there to you know, join this। Thanks।